we were discussing perfect competition, and along with the perfect competition part, we have studied equilibrium price under perfect competition. So today in our lecture, we are going to study another form of market called as monopoly. So today we would be describing the type of market called as monopoly. Now, mono matlab single, poly matlab seller. A market with a single seller. Monopoly is a market with a single seller. So what does the meaning say? It says monopoly. So the meaning says monopoly refers to the market structure where there is a single seller and large number of buyers dealing in a unique product. Dhaval, now is it clear to you, Dhaval? Dhaval, is the voice now clear to you? So it says monopoly refers to a market structure where there is single seller. ये बहुत important part है. That in this type of market, the seller is a single seller. Only a sole single seller is there. And number of buyers are large, and they deal in unique product. तभी यहाँ पे जो है पहले हम इसके फीचर्स स्टडी करते हैं और फिर थोड़ा 12th स्टैंडर्ड से ज्यादा इसके अंदर सीखने की बात करेंगे. हम पहले इसके फीचर्स को सीखते हैं. So, अभी हम लोग उसके फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं. फीचर्स ऑफ मोनोपोली. So the heading, features of monopoly. इसका सबसे पहला फीचर है single seller. In a monopoly market, there exists a single seller, only one seller. Single seller. इस single seller को हम economics में अभी we will call him as
monopolist. We will know this single seller as monopolist. Now he is a single seller. He is having an entire control over the market. He has entire control over the market. एक बहुत important point आपको ध्यान में रखना है. That in a monopoly market, the single seller will have entire control over the market. दूसरा है large number of buyers. In a monopoly market, the number of buyers are so large that a single buyer cannot influence the market, but collectively they can. अभी आज इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इस टाइप ऑफ मार्केट का दे सकते हैं is about Maharashtra. In Maharashtra, there is one company called as Mahavitaran, or you call it as MSEB, Maharashtra State Electricity Board. अभी ये जो कंपनी है सिंगल सेलर है, except Mumbai, in entire Maharashtra, MSEB provides electricity, single seller. पूरा कंट्रोल है उसके पास, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. अभी आपने अगर देखा रहेगा पिछले एक हफ्ते से सारे सोशल मीडियाज में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पे एक चीज डिस्कशन पे है. क्या है डिस्कशन पे इस कंपनी से रिलेटेड? किसी को कुछ आइडिया है क्या है डिस्कशन? बिल ज्यादा आ रहा है, बिल्स आर कमिंग वेरी हायर, राइट? अभी एज एन इंडिविजुअल बायर आप जाके एमएससीबी में जाके बात करो, मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे है? व्हाट द ऑफिसर विल रिप्लाई, यू नो, पहला पैसा भरो फिर आओ, बाद में बात करते हैं, एडजस्ट होता है तो देखते हैं, पहले भरना तो पड़ेगा. दे विल से दैट. सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस. मगर आज आप ऑब्जर्व करो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे से all buyers have come together. They have come together. They are posting. They are putting up their objections. इसको ध्यान में रख के अगर आपने देखा रहेगा, कल एमएससीबी ने अपने वेबसाइट पे एक नया ऑप्शन ओपन किया कि अगर आपको बिल में कुछ तकलीफ लग रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट किया है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस ऑप्शन पे जाओ, आप वहां पे अपना डिटेल्स पुट अप करो, आपको रिवाइज बिल कैलकुलेट करके मिलेगा. वो कैलकुलेशंस का प्रिंट आउट लेके जाओ एमएससीबी में, एंड देन द ऑफिसर ओवर देयर विल मेक द करेक्शंस. आपको प्रॉब्लम लगता है तो उन्होंने ऑप्शन खड़ा करके दे दिया आपको. तो डेफिनेटली ये करना उसके लिए क्यों पॉसिबल हुआ, सेलर को ये करना पड़ा. क्यों करना पड़ा? क्योंकि बायर का प्रेशर आ गया. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. इंडिविजुअली दे कैन नॉट, collectively they can influence the market. अभी यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा इसका जो फीचर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। यूनिक प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को यूनिक क्यों बोला गया है? द प्रोडक्ट, why it is called a unique product? Because this product is available only with the monopolist. मार्केट में ये प्रोडक्ट हर किसी के पास नहीं मिलेगा और ये प्रोडक्ट यूनिक होने के वजह से कस्टमर्स के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैनेज विद द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय द मोनोपोलिस्ट। वो जो प्रोडक्ट दे रहा है उसके साथ आप मैनेज करो। और दूसरा ऑप्शन कस्टमर के पास है, मैनेज विदाउट द प्रोडक्ट। मतलब तुम बोलोगे एक तो इतना बिल बेचते हो, ऊपर से इतना पावर कट भी करते हो। अभी इन लोगों के पास कैसे, देखो एमएससीबी के पास कैसा था ऑप्शन कि भाई समर सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड दे वर फोर्स्ड टू हैव लोड शेडिंग, दे यूज्ड टू टेक अप पावर कट। इस साल तो समर सीजन में आप देखना 22 मार्च से अभी जून 8 तारीख तक सब बंद था, इंडस्ट्रीज भी बंद थी। तो देयर वाज नो ह्यूज लोड ऑन द एमएससीबी। फिर भी उनका प्रोडक्ट यूनिक था, इसके लिए फिर भी ये लोग हफ्ते में 3-4 घंटा लोड शेडिंग कर ही रहे थे। और ऐसे जाके आप बोला आर्ग्यूमेंट करोगे कि अरे अभी इंडस्ट्रीज भी बंद है तो हमको तो पूरा सप्लाई किया करो। बट द सेलर, द ऑफिसर विल से, नहीं चाहिए तो छोड़ दो एमएससीबी, जाओ कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करो रोज। Right, this is one important point, that unique product, it is available only with the monopolist. So as a buyer, either you have to manage with the product which is provided by the monopolist, or you manage without the product. इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम यूनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। या तो फिर इसको कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, यूनिक प्रोडक्ट बोल दिया मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके लिए हमको वो प्रोडक्ट चलाना पड़ता है, जैसा भी रहेगा वैसे। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज restrictions, or very economic word I can take up is barriers in entry and exit का छोड़ दो, restrictions on entry. There are various restrictions on the entry for a new seller to enter into such type of market. ये restrictions अगर नहीं रखे जाएंगे तो क्या होगा, तो automatically the number of sellers can increase. But as the restrictions are not there, as the restrictions are there, new sellers cannot easily enter into such type of market. There are restrictions, barriers. The restrictions can be legal restrictions. The restrictions can be technological restrictions. The restrictions can be natural, legal,
टेक्नोलॉजिकल, ऐसे अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, by the way of which the new seller can not easily come into such type of market. Then another important feature of this particular market is determination of price. और इसके साथ में दूसरा फीचर भी डिस्कस करूंगा, determination of output, determination of price and determination of output. मतलब इस मार्केट में सेलर के पास दो अलग अलग तरह के पावर्स है। पहला, सेलर जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड कर सकता है, और दूसरा, सेलर जो है वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी डिसाइड कर सकता है। The seller can decide the price as well as output. Seller can decide the price as well as output. ये दो अलग अलग पावर्स है। ये दो अलग अलग पावर्स है सेलर के पास, बट याद रखना कि सेलर जो है ये दोनों पावर्स एक साथ यूज नहीं कर सकता। ये सेलर जो है ये पावर्स एक साथ यूज नहीं कर सकता। He can either decide the price, he can either decide the price or he can decide the output. प्राइस अगर उसने डिसाइड किया तो आउटपुट वुड बी डिसाइडेड बाय द मार्केट, एंड अगर उसने आउटपुट डिसाइड किया देन द प्राइसेस विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट. He cannot use both the powers simultaneously. He can either decide the price or he can decide the output. तो ये इसके फीचर्स हो गए. Now we need to describe types of monopoly. बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे अभी. So let us now describe types of monopoly. See, there are various types of monopoly. Let us describe them one by one. The very first and very important type of monopoly called as pure monopoly.
प्योर मोनोपोली, इसका नाम ही कुछ बता रहा, प्योर. This type of monopoly is a monopoly where the monopolist will have no close substitute for the product. The market where there are no close substitute for the product, then such type of monopoly is called pure monopoly.